So is the screen visible to all of you? Yes, Yes, sir. sir. So we have discussed that what are the cases for social responsibility in the last class. Now the next topic is what are the social responsibility towards different interest group. Interest group means those who are associated with the business, those who have some kind of interest in the business. Who are those people? Number one, please read it and be quick to respond. Shareholders or owners. Very true. The shareholders or the owners of the business. So, first, they are the most uh, in- interested group into a business, isn't it? Yes, sir. Then the second one is the workers or the employees. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then third, it is Government. written here Government. suppliers. I would ask you to change this and write here consumer. Please write here consumer. Okay. Yes, sir. And government and community. This is one point. Okay. We'll discuss it one by one. The first one is what is the responsibility towards the shareholders or the owners? Who is the owner of the business? So, what are those responsibility? First thing is that they must provide a fair return. Fair return means what? Suppose you have invested in a business 1 lakh rupees and you are getting in return 100 rupees. Is it fair? No, No, sir. sir. So, what would be fair? 1 लाख रुपया आपने लगाया and you are getting return 2 lakh rupees. Is it fair? Yes, sir. No, you are Yes, getting sir. 2 lakh rupees. Sir, 1 not lakh fair but lगा के- acceptable. It is too much. Yes, sir, it is acceptable but not fair. हाँ, it is not fair. Correct. सो व्हाट इज फेयर? अगर मान लो हम किसी बैंक में रुपया जमा करें तो भी हमें 5% 6% तो इंटरेस्ट मिल ही जाएगा ना, और उतना ही अगर हमें बिजनेस से मिलता है देन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड टेकिंग रिस्क? So what would be fair return? At least more than 15%, 20%, then it will be considered as fair. Though it will vary, business to business, it will vary. It will change. So I'm not giving you a clear-cut percentage kind of thing. I'm just saying it for the sake of example only, that what the fair return will vary from business to business, situation to situation. If it is high risk, you know that more gain. Higher the risk, higher the gain. Have you heard this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, in chapter So 2 it also. should be fair. Whatever the capital investment they have done, they should get, adequate amount of profit. Then we will call it the fair return. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Second point is that they need to ensure the safety of such investment. आपने हम शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी के. आई हैव परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी से फॉर 2 lakh rupees. So my 2 lakh rupees should not be wasted or should not be invested in such type of project where you are not getting it returned, or your investment may go into vain. That should not happen. So we have to make sure that whatever is the capital investment have been done by the shareholders, it should be safe.
है ना, कहीं ऐसी जगह ना लगा दें जहाँ से कैपिटल ही चली जाए, कैपिटल ही डूब जाए, राइट. So we need to ensure the funds also, safety of investment. Could you understand it? Yes, sir. Third one is that there are a lot of information about the business, like how many, what are the assets which we have, liabilities, means all the information which you have in the financial statement. How much is your debtors, how much is your creditors, so all these information the shareholder should get, and they should get it regularly, as well as accurate information, then full information. You have no right to hide some information from the owners or the shareholders. Correct? So you should provide all the information, full information to the shareholders. You all agree with me? Understood this point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second thing is that it is not that whatever you are doing at the present moment you should disclose it everything to the shareholder or the owner, but what you are planning to do in future, what are your future plans, how much the business you want to expand, है ना, जितना बड़ा बिजनेस है उतना ही बड़ा हमेशा थोड़े रहेगा, उसको बढ़ाएंगे भी तो बिजनेस को, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपका एक्सपेंशन का प्लान क्या है, हाँ, ये सब भी आप अपने शेयर होल्डर्स को या ऑनर्स को बताना चाहिए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आपके शेयर होल्डर या बिजनेस ओनर के टुवर्ड्स. होप इट इज क्लियर. Yes, sir. And Yes, please sir. check in your NCRTs, the same thing is written, what I have shown Yes, you, sir. but it is written there in paragraph. So you need to break it into 4 points, and these 4 points you can elaborate and explain it. So if in the examination it is asked that what are the responsibilities towards shareholder or the owners, 3 marks. So at least you should be able to explain these points in 3 points, means at least how many words? 100 words. Yes, sir. So please write your notes. When you are writing the notes, then you use the at least 100 words, 120 words. Okay. Yes, sir. Then the second point is, or the second category of the second interest group is what? The workers. So what you have towards workers, the responsibility of the business, number 1. Please read it. Providing opportunities to the workers for meaningful work. Yeah. I remember a story. Have you seen that? You must have heard Jinn, Chirag and Jinn wala story सुना है? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ही एक चिराग जो है किसी को मिला, उसने जिन निकल कर के आया, बोला कि काम बताइए. तो उसने कहा देखो आप मुझे अगर काम नहीं बताओगे तो फिर आई विल ईट यू, हम तुम्ही को खा जाएंगे. तो आपको हमेशा हमको काम दे रखना पड़ेगा, अगर काम नहीं बताओगे तो फिर आपकी जान को खतरा है. गेटिंग इट? स्टोरी आर यू Yes, sir. लिसनिंग? ओके. तो इस आदमी ने क्या किया, भाई वो तो जिन है, उसने बोला पूरे घर की सफाई कर दो, वो तो 5 मिनट में सफाई करके वापस आ गया. बोला आप दूसरा काम बताओ. वॉश ऑल द क्लोथ्स, वो भी कर दिया. खाना बना दो, खाना बना दिया. बर्तन साफ कर दो, बर्तन साफ. तो जो भी काम बोले वो 5 मिनट में करके फिर खड़ा हो जाए, फिर बोले आप बताओ क्या करें. तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई. हाँ, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, और जैसे ही काम खत्म होगा तो वो इसको खा जाएगा. हाँ? तो उसने सर, बाल उसको, सीधा हाँ, बाल सीधा करके रखने के लिए वही कुछ क्या करके? अपना हेयर दे दिया उसको कि उसको सीधा करके दिखाओ. अच्छा. हाँ,
I have heard in another way. Then the person went to his guru. वो दौड़ करके अपने गुरु के पास में गया, बोला ऐसे ऐसे एक जिन निकल आया, अब उसकी समस्या का समाधान समझ नहीं आ रहा, क्या करें। तो गुरु सेठ कि उसको बोलो कि एक बांस लंबा सा कहीं से लेकर के आए। तो वो लेकर के आ गया फट से, उसको तुरंत 1 मिनट लगता है लाने में। बोला अब इसको जमीन में गाड़ दो, गाड़ दिया। बोला अब इस बांस पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, यही करते रहो। तो वो ना जब खाली रहे तो उसको बोले बांस पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। और उसके बाद जब कुछ काम करवाना हो तो उसको जिन को रोके बोले रुक जाओ, चलो अब बर्तन साफ कर दो, खाना बना दो। फिर बुला करके बोले अब बस बांस पे चढ़ो उतरो। राइट। So this chadho utro work given to jinn, was this meaningful work? No, sir. No, sir. So if you are not giving the meaningful work to your workers, you are wasting the resource. तो आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, दे शुड बी गिवन मीनिंगफुल वर्क, है ना। अननेसेसरी केवल उनको बिजी रखने के लिए कुछ काम देना, जैसे वो जिनका हमने किया था, वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ? कुछ मीनिंगफुल काम उनके लिए हो। आप वर्कर्स ही उतने रखो, एम्प्लॉयज ही उतने रखो। ज़्यादा एम्प्लॉयज रखना कोई समझदारी की बात नहीं। ओवर स्टाफिंग इज नॉट गुड, अंडर स्टाफिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। So you should have the proper planning and then you should give them the meaningful work. Hope I made it very clear. Yes. Come on. Yes, sir. Second point says what? Please read. To create the right kind of working conditions. What is working conditions? Working condition is a very broad term. It includes the facilities which are given to your employees or the workers, है ना। जैसे प्रॉपर टेबल चेयर हो बैठने के लिए, फैन हो, एसी की ज़रूरत है तो एसी हो, लाइटिंग प्रॉपर हो, दैट इज कॉल्ड, दैट विल कम अंडर द वर्किंग कंडीशन, है ना। ठीक नहीं है, अंधेरा है, काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इट इज़ नॉट गुड। सो यू शुड प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशंस, प्लस वेयर पीपल आर कॉर्डियल विद ईच अदर, है ना। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए कि एक दूसरे का टांग खींचे, ऐसे लोग होने चाहिए जो एक दूसरे को कोऑपरेट करें। It all will come in the working conditions. Making sense? Yes, sir. Yes, sir. Third point. Win the cooperation of workers. What does it mean? Winning cooperation of workers means बोलो। So if we provide them better facilities and opportunities, then they will cooperate with us and they will do their best. Anyone else? What is winning their cooperation means? Anmol? So like giving them all the facilities, like winning their mind. Okay, Anmol, winning cooperation means? Anmol, can you listen me? Yes, sir. Winning cooperation means? I don't know, sir. Aryan Kumar? Aditya? Kashish? Sir, winning the cooperation means, sir, whatever we want from them, they are giving, they are cooperating us, sir, in
Sir, how we want they are cooperating to us. Amar, what is winning cooperation? Stuti, giving them courage to cooperate with the losses. Okay. And work hard. Okay. Pranjal has said so. Tushar, Yes, sir. what is winning Sir, cooperation? sir, I think, sir, they should align, sir, themselves as we want, and sir, we should provide them basic facilities, sir, for their enhancement. So, sir, it will be winning cooperation. Sir, mutual relationship, sir, जैसे होता है. Okay. See, there are two things. One is that I have given an order, means I am the boss and I have given the order and people are following it. They may follow it willingly and they may follow it unwillingly. Right? So if they are following Yes. it unwillingly, what does it mean? They may not give that kind of result which you are expecting. The result would be different. But if they are doing something willingly, then the result would be different. You see here in your class only, there are some students who are attending the classes willingly. So they are always ready to cooperate the teachers because they understand that by attending the classes, I am getting something. Then there are some students who are not willingly attending the classes. They have been forced by some force. I don't know what are those forces. Maybe their parents, or you feel that attendance is necessary, or whatever, whatever you are thinking, and based on that, you are attending the classes. So there would be a very clear cut difference between the performance also of that type of student and those students who are coming willingly. You all agree with me? Yes, sir. Everyone, I need yes from everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Who agree? Yes, sir. Yes, sir. If you don't agree, Yes, sir. say I don't agree. Yes, sir. No? So it is the responsibility of the business that they should provide such type of working environment for the workers that they are willingly ready to work. That is called winning the cooperation of the workers. Hope I made it clear. Yes, sir. Then next one is respect the democratic rights of the workers. Workers का अपना एक राइट है, दैट इज डेमोक्रेटिक राइट. दे मे फॉर्म द यूनियंस. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज यूनियन होते हैं ना. दे सेलेक्ट देयर प्रेसिडेंट एंड दोज पीपल आर टू negotiate with the management. Whenever they face a problem, then these type of union come to negotiate with the management. Basically, they work for the welfare of the employees. Have you seen this type of unions in movies? फिल्म में देखा होगा, प्राय जो हीरो मजदूर का काम करता है वो उसी मजदूर यूनियन का लीडर होता है. Have you seen? Are you aware of such type of labor union, employees union? Yes, sir. In history also. ज़्यादातर में आपने इन सब का नाम सुना होगा. वो लोग हड़ताल करते हैं, मैनेजमेंट के खिलाफ जाते हैं, इस टाइप का. यस, नो?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I have seen one old movie. I don't remember exactly, but there was, I think, the heroine was Jaya Prada and hero was Jitendra. In those days, I'm talking. This may be too old movie for you to see, but in that movie, it was very interestingly portrayed. That the Jaya Prada means the heroine was the owner of the factory, and Jitendra was the union leader, and they both got married. सो फ्रॉम एक ही घर से आते हैं, वाइफ कार में बैठ करके आती है और हीरो पैदल घर से आता है, एंड दे हैव कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट. तो हीरो इज फाइटिंग फॉर द लेबर. So such interesting story was there. So you can relate it to that. So that is forming unions. So you should allow them to form the unions so that they can take care of their welfare. Is it okay? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Then comes the last point, that is ensuring the fair ways and fair deal from the management. What is fair ways? Again, I would say that this fair word itself is very fair to understand. I mean to say, फेयर वेज मीन्स अगर एक प्यून का वेज कितना होना चाहिए, एक स्किल्ड वर्कर का वेज कितना होना चाहिए, तो ये सब अलग अलग होगा. ये इट विल डिफर person to person, situation to situation, company to company. So that should be taken into consideration and you should provide them the fair ways. It means that you should not exploit, as well as the workers also should not exploit the management. Both the things are here. So there should be a proper and fair deal among the workers and management. Is it okay to understand? Yes, sir. Then comes the responsibilities towards the consumer. What are the responsibility of a business towards the consumer? Point number 1. Please read this. Supply of right quality and quantity of goods and services to consumers at reasonable prices. A pack of a commodity, suppose a प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में पैक पे लिखा हुआ है 100 grams when packed, and you have filled 80 gram only, 70 gram only. Is it fair? Are you fulfilling your responsibility towards the consumer? No, sir. No, sir. If you are putting something adulterated product, is it not the right quality? It is not the right quality. Is it fair? No, sir. So you should provide them the right quality as well as right quantity also. Quality and quantity both should be correct. First thing, it is equally applicable in case of goods and services both. Then you have to provide this right quality and quantity at the reasonable price. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर डिमांड किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा हो जाए तो आप प्राइसेस इतनी ज़्यादा कर दें, और बिकॉज दे हैव टू buy this, so they will buy it at any price. That should not happen. You should provide these goods and services at the right quality, in the right quantity, at the reasonable price, or you can say at the right price. So basically you can remember it: right quality, right quantity, right price. If you remember these 3 words, you would be able to explain it. Okay. Yes, sir. Second Yes, point. sir. Second point. Please read this.
To take proper precaution against adulteration and poor quality, lack of desired service and courtesy to customers, misleading and dishonest advertising, and so on. Then you have to take certain precautions. Precautions number one against adulteration. Adulteration means सर मिलावट. हाँ, किस चीज में क्या मिलाया जाता है जरा बताओ तो. जैसे सर लाइक केमिकल्स सर. हाँ, Water in milk. एग्जाम्पल. हाँ, पानी में दूध नहीं, दूध में पानी. हाँ. और पीपर, यू ऑल नो पीपर. What, sir? Yes, sir. What, sir? पीपर उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गोल गोल ब्लैक कलर, ब्लैक पीपर. The black pepper. काला हाँ, काला हाँ, नमक. हाँ. Kala नहीं. mirch. Kala mirch. Oh, हाँ, kali mirch. काली मिर्च. काली अरे वही मिर्च. काली नमक. काली मिर्च हिस्ट्री में पढ़ा काली है. काली नमक. मिर्च और काली नमक में डिफरेंस होता है. हाँ, करेक्ट. सो हम काली मिर्च की बात कर रहे हैं. काली मिर्च में पपीता देखा है तुम लोगों ने, पपाया, उसके सीड्स मिलाए जाते हैं. वो भी देखने में वैसे ही लगते हैं. इसी तरह से मस्टर्ड ऑयल में पाम ऑयल का मिलावट. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें कुछ कुछ चीज़ें मिला करके मार्केट में बेची जाती हैं. कैन यू नेम फ्यू मोर? सर याद ही नहीं आ रहा है. ब्लैक पेपर में जैसे हमने सीड्स ऑफ पपाया बताया, इस तरह का कोई एग्जांपल? नहीं. सर मिल्क में जो फोम आने के लिए, उसके लिए वो जो शेविंग फोम होता है वो यूज होता है. हाँ, हाँ, ठीक है. इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट में मिलावट होती है, अडल्ट्रेशन होता है. तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का. किसके प्रति? कंज्यूमर्स के टुवर्ड्स. व्हाट दैट यू शुड नॉट give them adulterated product. Correct? Second thing is that you should not provide them the poor quality product. Whatever you are providing, it should be the right quality. Right? Then lack of desired service. जो सर्विस हम चाहते हैं, यानी हमारा जो कंज्यूमर चाहता है कि हम उसको होम डिलीवरी करें या उसको प्रॉपर पैकिंग करके सामान दें, so all these desired services also we need to provide. There should not be no lacking into it. Then you should be very courteous. Your behavior should be very courteous towards your customer. So you should have the courtesy towards your consumer or the customer. Getting it? Understood? Yes. Yes. बस केवल 2-4 बच्चे यस सर बोलते हैं, बाकी सब सोए हुए हैं. प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग. यस, नो. Yes, sir. Yes, sir. Then there are some advertisement which are dishonest, which are misleading. You should not do that kind of advertisement which are misleading and dishonest. Right? जैसे आपने देखा Yes, होगा sir. शैम्पू का ऐड आता है जिसमें बाल इतना चमक गया कि उसमें चेहरा दिखने लग गया. दिस इज नॉट द राइट थिंग टू, ना, ये मिसलीडिंग है. बट उसमें लिखा रहता है, ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं अब आजकल लॉ से बचने के लिए. उसमें अब वो लिख देते हैं कि दिस इज द इफेक्ट ऑफ कैमरा. नो, हैव यू सीन shampoo advertisement where it says that hair is shining like mirror? Yes, Come on, sir. tell me yes, no. The L'Oreal shampoos in their advertisement, Uh-huh. the hair is shining so much, but the real thing is different only. So please
हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लास्ट पॉइंट, प्लीज रीड. I want someone They who must does not read. रुक जाओ आदिति, you don't read. आर्यन कुमार, Yes, yes. पढ़ो. They must also have the right of information about the product, the company, and other matters having a bearing on their purchasing decision. What does it mean? What did you understand after reading it? Please say. You have the right of information about the product. जो इस प्रोडक्ट को आपने खरीदा है, जिस प्रोडक्ट को आप खरीदने वाले हैं या खरीदने का डिसीजन लेने वाले हैं, right? For all those people, you should provide them the right kind of information. That is why it is mandatory that you write about the product on the packet, right? So right information is the responsibility of the business towards the consumer. है ना? अब देखो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, इसमें लिखा रहता है ना, हाउ टू यूज. You know why? Because you have this right. कंज्यूमर्स राइट पढ़ा होगा, तो आपको Yes, सारे sir. कंज्यूमर्स राइट मिलने चाहिए. ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then Yes, the sir. last one, responsibilities towards the government and community. Number 1, please read it. This is very easy to understand. First point. Those who have not spoken till now. Respect the laws of the country. लॉज ऑफ द Create कंट्री माने जैसे हम इंडिया में Constitution. बिजनेस कर रहे हैं, तो इंडिया का जो लॉ है बिजनेस से रिलेटेड, उसका हम रेस्पेक्ट करें. जैसे यहाँ जीएसटी देना है तो देना चाहिए. आप ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो लॉ है वहाँ का, उस कंट्री के लॉ का आप रेस्पेक्ट करें. करेक्ट. सेकेंड पॉइंट, Pay taxes regularly and honestly. ईमानदारी के साथ में टैक्स दीजिए और रेगुलर दीजिए. ऐसे नहीं कि 3-4 साल बाद एक बार टैक्स देंगे. अगर आप रेगुलर टैक्स नहीं पे करते हैं, जैसे 3 मंथली जो पे करना है उसको 3 मंथली पे करिए, मंथली जिसे पे करना है उसको मंथली पे करिए. नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान जो गवर्नमेंट को करने चाहिए उन सब रुक जाएंगे, राइट? और सबसे बड़ी बात, यू शुड नॉट गो फॉर टैक्स इवेजन. टैक्स का चोरी नहीं करना है, टैक्स बचाना नहीं है. हाँ, आप ऑनेस्टी के साथ में टैक्स पे करिए. थर्ड पॉइंट, Behave as a good citizen. not only that you are just following the law of the country, but you should behave like a good citizen. Good citizen क्या क्या करता है? बोलिए. Follow all the rules and regulations and Responsibility. respect the environment. Okay. Today I will be posting one good Cooperate video with the government. that how you should be a good citizen. इसका एक वीडियो आज हम पोस्ट करेंगे. Please all of you must watch it. Then you will understand that what is the meaning of good citizen. अच्छा, मुझे ये बताओ, आप कार में कहीं जा रहे हैं, एकदम सुनसान सड़क है, और आपने चिप्स निकाला, अंकल चिप्स खाया और उसका रैपर खिड़की से बाहर निकाल के फेंक दिया. Is it an example of good citizen? No, sir. No, sir. So you understand what is good citizen, का responsibility क्या है. So you should behave like a good citizen. Next point. Act according to the well accepted values of the society. Yes, हर एक सोसाइटीज का वैल्यूज भी डिफर करता है. You agree with me or not?
Yes, sir. Yes, sir. Say in Western countries, if you meet to a woman, you should hold the hand and kiss the hand. है ना, कुछ कंट्रीज का ये ट्रेडिशन है, वहाँ के लिए इस वैल्यूज को अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी लेडी से मिले, उसका आपने हाथ पकड़ करके, हाथ को होल्ड करके किस नहीं किया, इट मीन्स इट इज अ डिसरेस्पेक्ट। यस और नो? यू मस्ट हैव सीन इन सम ऑफ द मूवीज। Yes, sir. Yes, sir. बट अगर यही काम हम यहाँ इंडिया में कर दें तो Case. Police case. Disrespect. तो फिर So get a slap on the face. हाँ, और लेडी के पाँव में सैंडल भी होता है, तो कुछ भी हो सकता है ना। सो वी शुड वैल्यूज जो सॉरी एक्सेप्टेड वैल्यूज है सोसाइटी की, वी शुड टेक केयर ऑफ दैट एंड वी शुड ऑनर रेस्पेक्ट दैट। करेक्ट? प्रोटेक्ट द नेचुरल sir. एनवायरनमेंट। आप जो भी इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करिए, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। देयर इज वन टॉपिक अबाउट दिस ना, दैट हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द मीन्स व्हाट इज द रोल ऑफ द बिजनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, देन आई विल डिस्कस इट इन डिटेल। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। should Should avoid avoid bad effluent, smoky chimneys, ugly buildings, dirty working conditions. मतलब bad working conditions you should not do, avoid it. Smoky chimneys you should avoid it. Ugly buildings, ऐसी बिल्डिंग जो देखने में ठीक नहीं लग रही, खराब है, टूटी फूटी है, ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। गंदा हो एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। यू ऑल अंडरस्टैंड इट। व्हाट इज अफ्लुएंट? अफ्लुएंट मीन्स, हु विल टेल मी? So what? Affluent, this word. Effluent. The waste, sewage waste. बेसिकली इट इज द वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसको हम कचड़ा बोलते हैं ना, इंडस्ट्री का कचड़ा। ये Yes, सब sir. निकाल करके हम बहाएं, नदी में डाल दें या बाहर गिरा दें, दिस वी शुड नॉट। सो इफ्लुएंट मीन्स वेस्टेज ऑफ पर्टिकुलरली स्पेशली द इंडस्ट्रियल वेस्टेज। करेक्ट? Yes, sir. लास्ट पॉइंट। Yes, sir. It also develop a proper image in the society through continuous interaction with the various groups of people. Yes, you should have a proper interaction with the society, with the various groups of the people. You should go to talk to them. Like आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए प्रेस के साथ, मीडिया के साथ, गवर्नमेंट के साथ, जो अलग अलग NGOs काम करते हैं, हाँ, उनके साथ। तो ये सब अलग अलग ग्रुप हैं, पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, उनके साथ भी आपको कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि आपकी अच्छी इमेज हो सोसाइटी में। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स कम्युनिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Then some Yes, more points are there. You just take the screenshot of this. It will help you while you are writing. But please follow these headings only to write in examination. But these are just the extra information. It has been shown here separately, towards government, towards community. But you will prepare it together. Okay? So next day we'll talk about the role of business in environmental protection. So with this, I would say thanks to all of you. Thank you, sir. You may leave now. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir.